Good evening, everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to this Yoga Vasishtha Multilingual Study Group evening session. Today we are on 14th day. नमस्कार, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के इस 14वें सत्र में स्वागत करता हूँ। अपना इवनिंग का जो स्टडी ग्रुप है, सत्र है, इसी के तहत हम लोग इसको चला रहे हैं। तो रोज की तरह let us close our eyes. We'll chant Omkar 3 times and then we'll continue with today's session. Today's session is going to be very interesting. We'll be starting with creation of this universe, the chapter number 3 called Utpatti Prakaran. So let's stay connected and close your eyes. आंखें बंद कर लें. Let's take a breathe in. एक साधारण सांस अंदर ले. And let go. खाली हो जाए. Let's take one more deep breath. And let go completely. पूरी तरह से खाली हो जाए. Let's chant Omkar 3 times. For Omkar chanting, breathe in. Let us invite the presence of divine, the master. ने गुरु का आवाहन करें. आवाहनम. 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 पुनः पुनः. गुरु वंदना. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री श्री गुरवे नमः. Let us pray to the Master, the Divinity. गुरु से प्रार्थना करें. All the words those we speak, all the actions that we do, all the thoughts that comes into our mind, all the decisions that we make discriminate through our intellect, all the impressions that get created on our memory, and if at all there is an element of ego still there, let that be because of the inspiration of the Master.
अपने मुख से निकलने वाली हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति पे तैयार होने वाले इंप्रेशंस, और यदि अब भी अहम का थोड़ा भाव बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। Let us experience the presence of the master within and outside. अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें। And slowly and gradually you may open your eyes. धीरे से अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Jai Gurudev, welcome back. So let's begin with today's session. Once again, I welcome all our Zoom participants. We are recording this session. It will be uploaded on YouTube. And we are also live on Facebook right now. So all our Zoom participants, all our YouTube viewers, and all our Facebook viewers, you are all welcome here. आप सभी का इस सत्र में योग वशिष्ठ के स्वागत है. So let us start with today's session. We have seen from last couple of days today we are on day 13. We have seen that first two chapters of Yoga Vashishta. Just for the new people, let me just show you the book that we are referring. This is the book of Yoga Vashishta, which is in language Marathi, Yoga Vashishta, Subodh Yoga Vashishta, written by Suman Mahadevkar ji. She stays here in Pune. So in parallel, there are multiple other books also available in Hindi and English. So if you need any help, if you want to go through it, read these books, or if you want to listen even, we also have some of the audio books are also available. Please feel free to reach out to me, Sangeeta ji, Kavita ji, and we'll be able to guide you. All the numbers will be shared here on chat also. So we will help you to get those books, Marathi book even you can order and it will get delivered to you. That is completely just as a voluntary seva we are doing. There is no interest of earning any commission or anything out of it. So till now we have seen two chapters. The first chapter is where Lord Rama, Yoga Vashishta is essentially a dialogue between Rama and Vashishta Muni. That is where Rama experienced the supreme vairagya, that is passion. And the Vashishta Muni, the one which is a sage, he guides him about the self-knowledge. And whatever the dialogue that happens between both of them is nothing but Yoga Vashishta. So the pronunciation is not Vashishta here, it is Yoga Vashishta. So in the second chapter, we have seen that Vashishta Muni starts giving him the knowledge, and he emphasized the importance of doing our actions, our efforts, giving our 100% Purushartha. Gurudev also explains Purushartha as Dharma, Artha, Kam, and Moksha. There are four pillars of we present on this planet Earth. There are some basic purpose of our life. So we got to perform our dharma. Dharma is following your daily routine, whatever as per your duties, whatever the role you are playing. That is your dharma. That is what you are supposed to do. Then dharma, artha. Artha means to do those things. Whatever you are supposed to do, whatever the means. For example, if you are an engineer, solely you are working with machinery, so that having that machinery is your artha. If you are a doctor, probably having a stethoscope and having that injection in your hand is something which is means to achieve whatever you are supposed to do. So that is the artha. It is the second thing. And then Kama means to do, you should have your goal defined in there. Somebody wants to become an IAS officer, somebody wants to become a doctor. So all your, whatever you want to do in your life, your goal should be very defined. And in that goal also, the ultimate and the supreme goal of your life is to attain mukti, moksha, liberation. So that is dharma, artha, kam, and moksha. So those things has to be there as a part of your purushartha. Whatever you do in your day-to-day routine life, it should be driven by all these four things. Now, how to do that? So here they gives one more sutra, and there are four pillars of achieving this in our life. That is our moksha ke char dwar phal. There are four things that has been said.
is one is shama. Shama means the peace of mind, which can be achieved through dhamma. Dhamma means the self-control. Via self-control, we get to achieve and establish in a peace of mind. Then the second one is said is the thought, that is the vichara. Because ultimately, whatever manifests, that is exactly that we are going to look here in the third chapter, which is a creation of this universe called Utpatti Prakran. How this entire universe is just created out of the mind, out of the thought. We'll get to know more details about it in a while. So the second one is a vichara, is the thought comes in your mind, and ultimately these are the thoughts, whatever you hold on to and act on it becomes an actions. And the same thing gets translated into your karma if it creates an impression with your memory. So that is what is karma, and the fruits of karma, obviously you have to write, here or even after. So that is why it is very important to have those thoughts. Whatever the thought comes, even applying filters and then picking up the one which are going to lead you to your purushartha, is dharma, artha, moksha, kama and moksha, to attain your goal of your life. It should be filtered accordingly. Otherwise, it gets diverted. So that is very important. Then your shama, vichara, and then santosha. We got to experience the santushti in life, the contentment in life, trupti in life. So that is also very, very important. And then the last one is the sadhu sangha, means having the company of the good people. Look at we all are here as a group, as a satsang. We have formed this group. Now, similarly, the students form their own group. Similarly, the doctors form their group. Similarly, the advocates form their group. So we are all walking on this path of achieving this mumukshatva, attaining this. Who am I? What is the purpose of my life? I want to be free. I want to attain moksha. That is what is mumukshatva. So we look at us. We all have come together, and how we are day by day, getting more deeper and deeper into this subject. Such an amazing journey. So that is also very. These are the 4 pillars of knowledge that has been given in the first chapter, Dispassion of Rama, which allows us to get out of this worldly matter and be focused on ours, and move your journey from outward to inward, and focus your journey towards achieving the self-knowledge. Second chapter, we saw some of the tools that we can use to achieve whatever is being said to achieve. And in the third chapter now, there is an ultimate sutra that is going to be given here. Vasishtha Muni tells Rama that knowledge is about this creation of this entire universe, which is very, very interesting. Now we also said that, say, look at this adhyatma, or this spiritual knowledge, or whatever we are going to see here. It is not something in the air, wishy-washy. No, it has everything that even our modern science is now started acknowledging. It's not that modern science has invented something new. They have just started discovering, which has been said thousands of years back. It was all there. It was all there, written in scriptures and all that. So how do we find the latest research and its roots in all these scriptures? So one of that scripture is Yoga Vasishtha, and we'll find how things are related. Now we just propose it. We are not going to claim anything, this and that. We are going to prove this and that. No. We are here just to discuss our opinions, our understanding about it. No? We are not claiming anything here, right? So everybody will be free to express their opinion, and will also ask questions so that the things will become more clear. So let us look at it to understand this, how the science is related to this knowledge. We also saw a documentary here. That's a science documentary which is being prepared by world's topmost psychiatrists, world's topmost doctors, world's topmost mathematicians, and world's topmost scientists. Now they all have come together to understand, what this creation is all about, what this universe is all about, and they started proposing certain findings, based on their own understanding. And that is where this subject falls under the purview of something called as quantum mechanics, quantum physics, and even the latest research that is there in that field is something called as string theory. So we'll correlate, and just to understand and make this correlation, we watched a 20-minute movie, and we'll keep on watching it will be continued even the coming days. We'll keep on watching every 20 minutes, and we'll try to correlate how does that
is being said in the movie is related to even this knowledge of Yoga Vasishtha. So now let us recap that what has been said in the movie, whatever movie that we saw for 20 minutes, what is it was there in that. So the first thing there, the scientists, we saw the scientists and doctors, they were raising something called as what is real and what is unreal. Hmm? सत्य क्या है और असत्य क्या है? Now, if are there any possibilities that we exist, the same being exist at multiple places? Is it something possible? They're raising this question just to create that curiosity. Such questions are do come, sir. The seeker, the one who is seeking for the highest knowledge, they often come across such question. Is there exist? Just to give you an example, my 10.5-year-old Soham, he was talking to me just like that on some subject, and he said me, you know, Dada, look at this wall, and you know what I'm thinking? I want to get through this wall, and I'm just thinking how. सामने वो ये है वॉल है और मुझे उस वॉल के परे जाना है, and I'm just thinking how. I don't know. Today I don't know how to get into it, but I'm just thinking. So he keeps talking certain things like that. So see, look at the questions that hover on our mind. Then if we kind of see something in our life, the second thing, third thing that they said is that whatever you are seeing, whatever we see through our eyes. So is it that we are actually your eyes are seeing it? It's what your five senses are there. The eyes is the sense of sight, and this karmendriya, that's one indriya, which is the object which is used in this sense. That is your eyes. So is it that your eyes are actually seeing it, or is there something else in the background, in the behind? Is it that mind, or is it that brain is actually seeing the thing? They raise this question because once they have done the research, they found out that it doesn't matter to the brain whether the signals are actually coming through your eyes, or even if you have an in between your eyes and the brain, and if you put some chip, and if that chip is giving you an experience to the brain doesn't distinguish between these two, for it is same, and the kind of response that it creates on this body and mind is actually the same. It doesn't distinguish. If we see this, if you want to really correlate this thing with a thing, let me tell you a story about Raja Janaka. There was this king called Raja Janaka, and he was sitting in his court. This story comes from Ashtavakra Gita. So he was just sitting in his court, and then he happened to see that he is very, very hungry. And he has this only one bread, a piece of bread, and he's just running after. He's very hungry, and there is no food around. And he happened to go and sit below the tree, and now he's just about to eat that. Suddenly, there are one or two people comes and they ask him, "Okay, please give us. We are also very, very angry." And it is a ritual. It is a dharma. It is a path that these sages or these kings they used to walk in the Satyuga and all that. So you got to share. If somebody asks you something, and if you have something, you are bound to share that. So we happen to share the half of the bread with that people. Now he has only one bread, and now he's just about to eat that. The one bird comes, he just picks up that also, and it just flies away. And that king does, oh, no, oh, wow. He just as a just do the action that just to catch the bird, and suddenly opens up sides, and he finds himself in the court. He's sitting inside the court. There is some court. There is some matter that is being discussed by the ministers, and everybody suddenly looks at the Raja Janaka, what's happened to him. And now Raja Janaka explains them the story that look, such and such things happened, and probably I was dreaming, and these things happened. He explains whatever he experienced. But the fact is that if it would have been happened in the reality, whatever that hunger that is created, what are the emotions that were created within the body, within the mind, are those emotions? No? It is this exactly same emotion that were created even though Raja Janaka, the king Raja Janaka, was just dreaming about it.
It's the same neurons. If you go and look at in medical science perspective, it's the same neurons that it fires, even either it is happening in the reality or you are just dreaming about it. We all have gone through this experience of Raja Janaka, right? In our life, one point of time, some point of time, we just get caught up in our own fantasies, and effect that it creates of those fantasies are actually real on your body. Yes, you all have this experience in life. The same thing happens. Now Raja Janaka is confused because he is an intelligent one. Huh? So he wants to find an answer behind this. See what is real and real. What is the guarantee that I'm sitting in a court here is not real? What is the guarantee of that? Huh? This could be even a dream also. What is the guarantee that okay, Someshwar is sitting here and Sangeeta ji, Usha ji, Varsha ji, Sachin ji is all actually listening to me? What if, how come it is like possibly, why it is not possible that I'm just sleeping in my dream, it's 2 o'clock in the night and I'm just dreaming, I'm talking here and all you people are listening? What is the guarantee of that? Can anybody give guarantee? There is no such. So same questions comes into Raja Janaka's mind, and then he starts asking all the scholars, that tell me what is real. And then somehow they could not dance, and somehow he finds sage Ashtavakra, and then Ashtavakra explains in the whole knowledge, and that is called as Ashtavakra Gita. There is not time for us to go into details of what has been said in Ashtavakra Gita, but here we are talking about the same thing that even the scientists here now saying that our brain does not differentiate between if the signals are really coming through your eyes or you are just imagining about that in your dream. So if such thing happens, how come when we say that the real thing is real, and there is a question always comes up, what is real and what is unreal? What is Satya and Asatya? Hmm? Then there is also a possibility that has been discussed that if you are the one, and then say that the answer to such question, nobody else will be able to give you that experience. You are the one, you are capable one to find out yourself who you are, and nobody else is going to tell you the answer for that. Even if they're telling run away, they don't know. Because the one who know will not tell you, and the one who doesn't know anyway, he doesn't know, he will try to tell you something, you don't listen to them, just run away. So it's being said that you are capable. Now the same thing is being said even in spiritual aspect, many times. So asking such questions, who am I, what is the purpose of my life, it leads you towards that understanding, which is opens up the door to have a higher possibilities, to explore more potential of our body, our existence, our mind, our intellect, no? Our memory. It opens up multiple doors for the gross as well as to the subtle. No? So that is very beautiful. So even science, all the doctors and psychiatrists, they found saying about the talking about the same thing. So there are multiple such options available. There are multiple such answers available. Now, what is happening within us actually is something say created as a reality outside. Now, this is a very rational concept. No? Till now, we have been believing that okay, something is happening outside. All the signals comes from outside to us, and we perceive that as a reality. Now, here it has been said exactly opposite of that. That here we are saying whatever is happening within you, the same reality is created for you outside. So my reality is different, Ushaji's reality is different, Sachinji's reality is different, Sangeetaji's reality is different. No, you are creating your own reality. No? In your mind, you are creating that reality, and the same thing manifests on outside. So in the laws of attractions, if you have heard about it, it also says the thing that if you decide something, this universe modifies itself to fulfill your wishes. Now, if you are doing your purushartha, if you are giving your efforts 100% in that direction. So same thing is said here also. When we look now what is been said in Yoga Vasishtha also, maybe I'm not taking. So that is explain here who looks actually, whether it's your eyes or your brain, because it's the same neurons that inspire. So those are all the things that we saw from a movie. Now let us look at what has been said in the Yoga Vasishtha book. So here the first thing that Vasishtha Muni tells Rama, that Rama, look, now I am going to tell you something very, very precious. No?
Now that whatever I'm going to share with, it will just go and hit all your concept. It will just go something very rational, that a very rational thinking is required to understand what I'm going to tell you. So just understand this, no? Just believe in this, and then one by one, slowly and gradually, we'll actually get into more details of how this actually is true. So the first bomb, the first thing that Vashishta Muni actually opens up, that this entire world, what you are seeing outside, is actually not the real one. The first thing, जगाची उत्पत्ति भास मात्र है. It's been said. ये जो बाजू आजू बाजू का जो वर्ल्ड है, ये सिर्फ एक कल्पना है. It is not real. That's the first knowledge that is been given by Vashishta to this, that this entire universe is just an illusion. Whatever it, through which it is created, whatever you refer to as a consciousness, as Atma, Chetana, whatever, Shiva, no? It has been said here that the same thing which existed before the creation is the same thing actually exists after the creation also, because whatever is appeared to be created actually is not created in reality. It's an illusion. No? That is the second thing that Muni tells you. Just an illusion. So to explain this further, he gives an example. Haven't this happened with you, that there is a rope that is there on the ground, and suddenly you start thinking about that rope is actually a snake, and you get frightened, and once you see is that, okay, the morning happens, and then you look, oh, it was just a rope, I was unnecessarily getting frightened. Or even the pearls, where the pearls reside, all the Shimla is called, the home for the pearls. Does it sometimes look like a silver object to you? No, all things of all these illusions. No, we have seen many such optical illusions also exist. So whatever we perceive, is that the real one, or the real one is the real one, or even that is just a dream? So such kind of illusions, Vashishta Muni is explaining that, look, whatever you see, even what you exist, what I exist, and whatever you exist this as universe is just an illusion. It is actually not the real one. So what appears separate is just because of the ignorance. Whatever you think that you are separate, I am separate, this universe is separate than me, it is just because of the ignorance. It is just that we have not yet realized the real knowledge. We have not yet looked into the real knowledge. We are not having an experience of that. Because of that only, we are seeing the things as the real one. We're not seeing also, they are just perceiving. The reality could be actually different. So it has happened with our earth also. No? Initially, we thought this earth is a flat. So that was the truth for us. Later on, we discovered, we did little bit of more research. We came outside, and then there was a proposal that it's not it. Yeah, see, all this day and night is happening because it's round and it's evolving. All these things evolved as a theory, as a science. And that time we started accepting that it's not just a flat object, it's the spherical object. So likewise, so your perceptions are there, whether they may be true or they may not be true. You know, have that belief in life. It has happened multiple times with us in the past also. So all this concept and all this concept, who created, why created, or all those doubts that comes into our mind about the creation. Who has created this entire universe? Why it is created? What was the purpose of creating such universe? How it is created? Now Vashishta tells us that all such questions automatically drops when you start believing that this is just an unreal thing. How? That we'll see. We'll see the details. But these questions, these doubts will disappear from your mind. So all these things will be literally removed. No? So आगे चल के बताते हैं, the further thing it is explained that this drishya jagat is asatya. No? What are the root causes of this? No? So because of this, you believe that this whatever universe, that whatever this drishya jagat means, the one scenery. You think that this scenery is real one, and because of that, you believe that this is truth. This is the satya.
all these other things keeps on happening. You get entangled into all this business, you get entangled into all this sukha dukkha, the happiness and the sorrow, you get entangled into all this bondage, you get in the concept of this good days and bad days, papa punya, no, all this concept, or even your desires, your cravings, all those vasanas, all those wishes, you get all stuck into all these things. It is just because you think it is real. The moment you realize that this is not real, automatically all these things which appears to be a bondage to you will be eliminated out of your system. So all we as a human get stuck into all these things, thinking that whatever is happening is real, thinking that whatever is impermanent in nature, thinking that is a permanent, thinking something which is permanent in nature is thinking it is impermanent. No? Thinking something which is not constant in nature, thinking it is constant, and thinking something which is constant in nature as changing. All those things that ignorance that we carry, once we come to know this knowledge, once we come to know that this is unreal, all these things, all this bondage will be automatically disappear. So that is where what Vashishta Muni says about this, and that is where what the 20 minutes of movie what we have watched. So अभी हम लोग क्या करते हैं, now we'll see the same thing in also Hindi also, because many people do not actually understand English, and after that we'll open up the session for question and answer. तो अभी हम लोग इसको थोड़ा हिंदी में भी इसका अनुवाद जो भी आज हमने देखा उसको जान लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि योग वशिष्ठ का जो अपना ज्ञान है वह प्रभु रामचंद्र जी और वशिष्ठ मुनि इनके भीतर जो हुआ संवाद है वही योग वशिष्ठ के रूप में आपने सामने प्रस्तुत है। तो प्रभु रामचंद्र जी पहले प्रकरण में अपना वैराग्य वहां पे बताते हैं, किस तरह से उनको उद्विग्न हो जाता है मन, जो कुछ भी वो देखते हैं संसार में जो कुछ भी चल रहा है ना। तो वो बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी रेज करते हैं, बहुत बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं जो कि हमें अध्यात्म की ओर, मोक्ष की ओर लेके जाते हैं। तो उन्हें भी वही इंटरेस्ट है कि यह इम्परमानेंट जो सुख है मेरे जीवन में, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर दैट परमानेंट सुख, चिदानंद स्वरूप जो होता है वो जो होता है उसमें मुझे इंटरेस्ट है। मुझे अभी छोटे छोटे सुख जो मिलते हैं वासनाओं से, इधर उधर से, प्लेजर से, छोटे छोटे सुखों में मुझे कोई अभी इंटरेस्ट नहीं। तो हमने और भी देखा कि जो अपना दूसरा चैप्टर है मुमुक्षुत्व व्यवहार प्रकरण जो है, कि फिर अब ये ऐसी स्थिति किसी की हो जाती है तो वो जो लोग जो मोक्ष की राह पर चलते हैं, मोक्ष की अपेक्षा अपने जीवन में करते हैं, इस तरह के प्रश्न उनके जीवन में आते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो उनको करने के लिए यहाँ पे फिर मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण के ऐसे लोगों का व्यवहार प्रकरण के साथ किस तरह से ऐसे लोगों की सोच होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पुरुषार्थ बहुत अपने जीवन में इस राह पे चलने के लिए आवश्यक होता है। तो पुरुषार्थ को गुरुदेव भी एक्सप्लेन करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये 4 चीजें बताए गए पिलर्स होते हैं उसके, वो हमें पुरुषार्थ के रूप में अपना 100% हमें देना आवश्यक होता है ना, टू अटेन दिस, जो मोक्ष है तो अटेन है। एंड फिर वहां पे 4 और टूल्स भी दिए गए हमें, मोक्ष के 4 द्वारपाल जिन्हें बताया गया है। उसमें हमें श्रम देखा, श्रम माने पीस ऑफ, शांत मन, उसमें अपने आप में शांत हो जाना, स्थित हो जाना अपने आप में। कैसे करेंगे, तो दम, दम माने सेल्फ कंट्रोल, अपनी जो वासनाएं होती है बाजू बाजू में जो अपनी को बाहरी दुनिया में खींचती रहती है, उसके अंदर कंट्रोल पाके, सेल्फ कंट्रोल पाके टू गेट इनवर्ड द जर्नी, अपने को बाहर की ओर से बहिर्मुख होने की जगह पे आपको अंतर्मुख होने का जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, उसको कहते हैं दम। तो दम के माध्यम से श्रम को एस्टेब्लिश करना, ये अपना पहला बताया गया टूल बताया गया कि इसके जरिए आप कर सकते हो। दूसरा बताया गया कि विचार, बिकॉज ये विचार ही होते हैं जो आगे चल के हम लोग उसको पकड़ के उसके ऊपर एक्शन लेके वही अपने फिर इंप्रेशंस बन जाते हैं और कर्म बन जाते हैं। तो यदि कोई विचारों के लेवल पे ही अब वो फिल्टर लगा दे कोई, जैसे नहीं होता है कि अपना ओजोन लेयर होता है अपने पृथ्वी के आजू बाजू में, सूरज की किरणें आती है तो ओजोन लेयर क्या होता है, वो अल्ट्रावायलेट किरण जो होते हैं उनको क्या करता है, फिल्टर कर लेता है, अपने तक वो पहुंचने नहीं देता। तो ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा, अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल एनालॉजी, देखो ओजोन लेयर होता है। तो ऐसा एक ओजोन लेयर यदि अपने हम लोग विचारों के आजू बाजू क्रिएट कर ले, तो हम लोग बोल नहीं है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये रिजेक्शन नहीं, ये जस्ट अप्लाइंग एंड फिल्टर कि ये थॉट आया, विचार आया,
लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। सिर्फ बहुत कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई स्टूडेंट है, बैठा हुआ है स्टडी करने, पढ़ाई करने, और सडनली उसके मन में कुछ और थॉट आ जाता है, चलो मूवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी है, हाँ कुछ टीवी पे कुछ चल रहा है, या कुछ दोस्त ने कुछ और करने के लिए बुला लिया, लेकिन उसका ओजोन लेयर एक्टिवेट है, बोलेगा नहीं नहीं, मेरा पढ़ाई का समय है अभी, मैं पढ़ाई करूंगा। ऐसा ओजोन लेयर, ऐसा अगर फिल्टर यदि अपना भी तैयार हो जाए, तो अपने मार्ग से अपने को कौन भटकाएगा? या आप गृहिणी हो, आप स्टूडेंट हो, आप अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, अपने लक्ष्य से हमें कौन भटकाएगा? और लक्ष्य क्या? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अपना काम माने जो अपना लक्ष्य है वो डिफाइन होना चाहिए। और अपने सारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लक्ष्य होते हैं, किसी का इंजीनियर बनना, किसी का डॉक्टर बनना, किसी को अपने जॉब में प्रमोशन करना, किसी को अपना खुद का बिजनेस सेट अपना, अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं। बोलते हैं इन सब लक्ष्यों के साथ साथ ये याद रख लेना कि अपना ये मनुष्य जन्म है, और अपने मनुष्य का जो अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, वो मुक्ति है। उसको छोड़ना मत, वो उसको पकड़ के फिर बाकी की सारी जो चीजें, जो अपनी कामनाएं हैं उनको अचीव, बिकॉज मोक्ष की प्राप्ति करना भी तो एक कामना ही है ना? तो उसकी को काम बोला है, तो काम बुरा नहीं है, उसको कामदेव वाला काम नहीं समझना। काम मीन्स यहाँ पे कामनाएं कही गई है, तो बोलते कि ये भी बहुत जरूरी है। तो इन यहाँ पे वो चार चीजें और यहाँ पे ये चार चीजें, दोनों को हाथ में हाथ पकड़ के बोलते आगे बढ़ो, तो फिर वो उत्पत्ति प्रकरण में यहाँ पे आ जाते हैं। तो अपना जो तीसरा जो प्रकरण है वो उत्पत्ति प्रकरण है, और यहाँ पे फिर अपना यह जो विश्व है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुई, और उसकी उत्पत्ति का जो रहस्य है वो जान लेने के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे वो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जो अपने को बंधन लगते हैं, जो हमें सफरिंग्स होती है अपने जीवन में, जो तकलीफें देते हैं, ये सुख और दुख, ये जो पाप और पुण्य, ये जो रिलेशनशिप जो है जिसमें हम लोग बंधन में फंस जाते हैं, कैसे उससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, यह ज्ञान अभी वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बताने जा रहे हैं, और हम लोग भी उसको देखेंगे। अच्छा, इसमें और एक एस्पेक्ट हमने देखा कि ये जो नॉलेज जो हमने वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं यहाँ पे, कितना रिलेवेंट है इवन अपने साइंस के पर्सपेक्टिव। अपना जो आज का साइंस है, अपना लेटेस्ट मॉडर्न साइंस, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्ट्रिंग थियरी, जो लेटेस्ट रिसर्च जो है उसको कैसे वो कैसे वही लेटेस्ट साइंस के रिसर्च भी कैसे अपना रुख ज्ञान अपने ऋषि मुनियों ने कई सालों पैसे उनको अपने ध्यान की प्रक्रिया से, मेडिटेशन की प्रक्रिया से जाना था, और उसके बारे में जानकारी वो लोग रखते थे। तो हम लोग वो भी देखेंगे, वो एस्पेक्ट भी देखेंगे। वो एस्पेक्ट देखने के लिए हमने एक साइंस डॉक्यूमेंट्री है उसको देखना भी शुरू किया है, तो आज उसके 20 मिनट देखे, तो कल भी जाके उसके और भी अगले पार्ट्स भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो अभी दोनों चीजों को देख लेते हैं कि जो मूवी साइंस डॉक्यूमेंट्री थी वो क्या कहती है, और अपना योग वशिष्ठ के कुछ जो पन्ने हैं वो क्या कहते हैं, और दोनों का जो संगत होता है कैसे हम लोग उसको एक साथ मिला के अपना उसका अंडरस्टैंडिंग और बढ़ा सकते हैं। तो जो आज जो मूवी देखा उसमें इस तरह के प्रश्न भी उठाएंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम लोग कैसे इसको जाने, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है क्या कि जो हमें अपने जीवन का जो पोटेंशियल है, जो अपनी क्षमता है, उसके परे जाके जो भी अल्टीमेट पोटेंशियल है, अल्टीमेट क्षमता है, उसका हम लोग जीवन में अनुभव करें, करना है तो फिर कैसे करें। देन और भी यहाँ पे बताया गया है कि कभी आपने अपने आप को देखा है क्या अपनी ही दृष्टि से, वो अल्टीमेट ऑब्जर्वर, जो दृष्टा की जो बात कही जाती है, दृश्य दृष्टा, जो देखने की प्रोसेस होती है वो दर्शन है ना, उसके बारे में भी यहाँ पे बात कही गई है। ये अच्छा, ये साइंस डॉक्यूमेंट्री बनाई किसने है? तो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं, जो साइकाट्रिस्ट है, मानस शास्त्रज्ञ है, साइंटिस्ट है, जो शास्त्रज्ञ है, वो मैथमेटिशियंस है, गणितज्ञ जो बोले जाते हैं वो है। तो अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग जो अपना रिसर्च जिन्होंने किया हुआ है बॉडी के ऊपर, मन के ऊपर, ऑल द अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर, उन सबको एकत्रित लाके यह साइंस की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें जो सारी चीजें कही गई है वो यहाँ पे योग वशिष्ठ में भी हमें दिखाई देती है। तो इस तरह के प्रश्न वो पूछते हैं, आस्किंग सच क्वेश्चंस की मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, बोलते ये, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर आपको कोई बताएगा नहीं, आप अपने आप में सक्षम हो इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए।
क्या बोलते हैं, ऐसे कोई पॉसिबिलिटीज और ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं क्या? क्योंकि हम लोग जो देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ टाइम अपने वो ग्रास के लेवल पे ही देखते हैं कि, लेकिन ऐसे कोई सूक्ष्म एनर्जीज होती है क्या, सटल लेवल पे अपने अस्तित्व के कुछ स्तर होते हैं क्या? और होते हैं तो फिर हम लोग उसको कैसे समझे, उनको कैसे अडॉप्ट करें अपने आप को, हाउ डू यू डाउनलोड दैट, आज के लैंग्वेज में बोला है तो ऐसी एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को डाउनलोड कैसे करें ताकि उसको अपने जीवन में उपयोग कर सके। इस तरह की वहां पे बातें कही जाती है। वहां पे और भी मूवी में उन्होंने और एक भी बात कहा अपने को, कि कहते हैं कि अब तक तो हम लोग ऐसे समझते थे कि जो बाहर का जो दृश्य जगत है वहां से हमें सिग्नल्स मिलते हैं और वो हमारे मन में हम लोग उसको परसीव करते हैं, लेकिन बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, सच ए रैशनल थिंकिंग, वो बोलते हैं कि जो अंदर हो रहा है आपके, वही अपने आप बाहर होने लगता है। अभी ये इतना डिफरेंट थिंकिंग है, इतना रैशनल थिंकिंग है, तो इतना अपने ऊपर संस्कार हो गए कि ये बाहर का जो जगत है वो वही से हम लोग परसीव करते चीजें समझने में, एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो ये बार बार हमें वो अपने मेंटर है ना यतीन, वो बार बार कहते कि वो हथौड़ा जो है ना उसको मारते रहो, एक दिन यह जो कल्पना जो अपनी है मन में, ये जरूर आपकी टूटेगी, वो दीवार जरूर टूटेगी जो बना के रखी इतने सालों से, पता नहीं कितने जन्मों से वो दीवार जो बना के रखी है, वो दीवार वो जरूर टूटेगी। तो बोलते ये जो अंदर जो होता है, अपने अंदर जो होती है, वही बाहर भी अपना क्रिएट होता है, ऐसे साइंटिस्ट भी यहाँ पे बोल रहे हैं। देन उन्हें इसको समझाने के लिए और भी एक चीज बताया कि जो अपनी आंखें रहती है, वो आंखें देखती है या उसके पीछे जो अपना ब्रेन है और जो अपना जो मन है वो देखता है। तो बोलते इसको समझने के लिए अपनी आंखें जो होती है वो आंखें नहीं देखती, आंखें तो एक जो कैमरा होता है, वो कैमरे की जो लेंस होती है ना, वो सिर्फ उसकी तरह काम करती है। अक्सर में जो देखता है उसके पीछे की जो शक्ति रहती है, सेंस ऑफ साइट, वो देखती है। अक्सर में तो वो मन होता है, वो जो अपना ब्रेन होता है, वो एक्चुअली चीजों को देखता है। इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, लेकिन बोलते दोनों में कोई अंतर जो ब्रेन है वो समझ नहीं पाता, बिकॉज ब्रेन के अंदर जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जो उसमें केमिकल फॉर्मेशन जो होता है, जब कुछ वो दृश्य दिखाई देता है, वो दृश्य चाहे बाहर से देखा हुआ हो या आपने सिर्फ उस दृश्य के बारे में सोचा हो, ब्रेन में वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं, वही सिग्नल्स कम्युनिकेट होते हैं, और उसकी जो आउटपुट जो मिलते हैं, जो रिस्पॉन्स होता है, वो भी एग्जैक्टली वही होता है। तो जैसे आंखों के बीच में और आपके ब्रेन में कुछ अपने कुछ चिप, ऐसा न्यूरो चिप ऊपर लगा दिया और उसमें से वैसे ये क्रिएट किए, सेंसेशंस क्रिएट किए, तो ब्रेन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक स्टोरी भी देख लेते हैं। यह स्टोरी जो आती है, कहानी आती है अष्टावक्र गीता से। तो राजा जनक जी की ये कहानी है, जब वो भी बहुत ज्ञानी इंसान थे, लेकिन फिर भी उनको एक और एनलाइटन जो होते हैं, आत्मज्ञान जो होता है, तो उसके बारे में उनकी भी सीकिंग चल रही थी। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो ऐसे देखते हैं कि पूरा अकाल पड़ चुका है अपने राज्य में, और उनके पास एक ही रोटी, एक ही भाकरी रहती है। और फिर उसको लेके जाते हैं ऐसे दौड़ते हुए एक वृक्ष के नीचे आके बैठ जाते हैं, और वृक्ष के नीचे बैठने के बाद फिर वहां पे एक कोई इंसान आ जाता है और फिर बोलता है कि मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी। अभी उस वक्त वो धर्म पालन करना उनका कर्तव्य रहता है कि कोई अपने सामने आया तो अपने पास जो भी है वो आपको उनके साथ शेयर करना अत्यावश्यक होता है। हाँ, तो वो अपने से वो आधी भाकरी देके उसको दे देते हैं। अभी एक ही आधी ही भाकरी उनके पास बची होती है, और जैसे उसको निवाला लेके खाने के लिए, तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, सडनली एक पक्षी आता है और उस भाकरी को लेके वहां से भाग जाता है। तो बोलते हाँ, ऐसे करके एक्शन करते हैं उसको पकड़ने के लिए, एंड सडनली उनकी आंखें खुलती है तो देखते हैं कि वो भी दरबार में अपने बैठ के ये कर रहे हैं। सडनली वहां पे जो कुछ चर्चा चल रही थी, वो लोग भी उनकी तरफ देखते हैं कि अरे राजा जनक को ऐसा क्या हुआ। तो फिर वो सब कुछ जो उन्होंने स्वप्न देखा होता है उसको अपना कथन करते हैं, लेकिन उनके मन में प्रश्न यही उठता है कि मुझे भूख अभी भी लगी हुई है, मेरे शरीर लेवल पे जो लिखता है, मन में जो इमोशंस उससे पैदा हुए थे, वो एग्जैक्टली सेम है जो रियलिटी में जैसे भूख लगती है, जैसे मैं जागरूक अवस्था होता हूँ वैसे ही है। तो फिर वो जो मैंने देखा वो रियल था या अभी मैं जो देख रहा हूँ ये रियल है, सत्य क्या है? नो, ये मन में उनके प्रश्न उठता है और उसका जवाब वो अपने मंत्रियों से पूछते हैं, लेकिन कोई उसका जवाब ठीक से देख नहीं पाता, उनका शांत नहीं कर पाते उनके इंटेलेक्ट को।
तो फिर वो स्टोरी आगे बढ़ती है, फिर अष्टावक्र से उनकी मुलाकात होती है, फिर अष्टावक्र उनको ये सब ज्ञान देते हैं। अपना सत्र अभी अष्टावक्र गीता का नहीं चल रहा है, तो उस कहानी को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट भी देखो यही बात कह रहे हैं कि जो अपना ब्रेन होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो दृश्य जो दिखाई दे रहा है वहां से सिग्नल्स आ रहे हैं, या आप जिस आंखें बंद करके ड्रीम देख रहे हो वहां से सिग्नल आ रहे हैं। ब्रेन परसीव इट सेम, जो अपना ये होता है वो उसी को उसी तरह से वही सेंसेशन, वही अपने शरीर में वही वो प्रतिसाद देता है, वही प्रतिसाद निर्माण करता है। तो ये हो गया जो हमने अभी मूवी में देखा। अभी देखते हैं थोड़ा कि योग वशिष्ठ इसके बारे में क्या कहता है। तो वशिष्ठ मुनि बताते हैं राम को, देखो राम, अभी मैं तुम्हें कुछ जो बताने वाला हूँ वो तुम्हारे पूरे कंसेप्ट को हिला के रख देगा। हाँ? पूरे अपने जो थियरीज है, कंसेप्ट है, जो तुमने अपने मन में पाल के रखे हैं, उनको सबको भी मैं ये तोड़ दूंगा इसको। हाँ, तो इसको थोड़ा बहुत लक्ष्य दे के सुनो, और हो सकता है कि तुम्हें ये समझने में थोड़ा वक्त लगे, ये चीजें बहुत अपोजिट लगे, लेकिन पूरा अपना धैर्य लगा के सुनो कि मैं जो क्या बोल रहा हूँ। इससे जो अपने जो जीवन के जो आजू बाजू के सारे जो चीजें, मिजरीज जो बोलते हैं हम लोग, सुख और दुख, जो पाप और पुण्य, नो, ये सारे जो बंधन जो हम लोग महसूस करते हैं अपनी सारी चीजों में, और जो अपना क्रेविंग्स वगैरह आती है, वासनाएं आती है, विषय में हम लोग अटके रहते हैं, और मनुष्य मात्र इस सारा इसमें झूंझता है इससे बाहर निकलने के लिए। ये सारे जो सफरिंग्स है, सारे जो प्रश्न है जो तुमने अभी तक वैराग्य प्रकरण में भी उठाए थे, ये सारी शंका कुशंकाएं, ये मैं बताऊंगा, इससे तुम्हारी दूर हो जाएगी ना, तुम्हें वो मुक्ति की मार्ग पे चलने वाला राह इससे उजागर हो जाएगा। ऐसा करके सबसे पहला एटम बम फोड़ते हैं, और कि बोलते कि तुम जो ये जगत जगताची जी उत्पत्ति है, तो बोलते थी भास मात्र है ना? तुम्हारे मन में ये जो दिख रहा है ना कि इस जगत की उत्पत्ति हुई है, इसका जो क्रिएशन हुआ है, इट इज जस्ट योर इल्यूजन, ये तुम्हारी सिर्फ कल्पना है। पहला पहला आइटम बॉम्ब फोड़ते वक्त बोलते दिन, उसके बाद में जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है उसको हम लोग आत्मा कह के बुलाए, चेतना कह के बुलाए, या उसको कॉन्शियसनेस करके बुलाए, बोलते वो उसकी जो स्थिति होती है इस जगत को क्रिएट करने के पहले और क्रिएट करने के बाद, वो सेम ही होती है। कैसे सेम होती है? तो बोलते हैं जो जगत की उत्पत्ति आप सोच रहे हो रही है, वह सिर्फ कल्पना मात्र है, सत्य वह नहीं है, सत्य वह नहीं है। इस तरह से बताते हैं ना? तो बोलते हैं इसका नॉलेज जानने से क्या है, ये जो बोलते हैं ना, ये इल्यूजन्स जो है ना, कि बहुत बार बोलते हैं अपने साथ होता है कि वहां पे रोप पड़ा होता है और वो अपने को सांप के भांति दिखता है, वहां पे जो शिंपला पड़ा होता है वो हमको चांदी के भांति दिखता है। तो इस तरह के कई सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स हमने देखे हुए, हम लोग जानते भी है। तो किस तरह से ये इल्यूजन्स होते हैं अपने जीवन में, कैसे हम लोग उसको रियलिटी कैसे परसेप्शन करते हैं, उस बात उस बारे में बताते हैं कि देखो ये जो हम लोग देखते हैं सोचते हैं, यह सत्य नहीं है। कई बार अपने को यह अपने जो पंचेंद्रिय है ये हमें धोखा देते हैं। अपने साथ भी कई सार होता है ना, ऐसा दिखता है, हमने भी देखा था अपने अपनी जो आंख दिखाती है कि पृथ्वी सपाट है, बाद में जाके पता चलता है कि नहीं नहीं ये तो स्फेरिकल है, गोल है। लेकिन पहले आंखों को तो दिखा था सपाट है, दिखती तो है सपाट है, नो, लेकिन बोलते हैं ये तुम्हारे जो सेंसेस है वो तुम्हें धोखा देते हैं। परसेप्शन जो अपना होता है वो रियलिटी हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत बार होता है ना अपने साथ भी, नॉट ओनली बॉडी के लेवल पे, देखने के लेवल पे ही नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो सोचते हो वो सामने वाला कुछ और मीन करता है, उसको अलग तरह से परसीव होता है, बिकॉज आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आपका मन अलग होता है, उसकी स्थिति अलग होती है, तो उसको अलग तरीके से हम लोग परसीव करते हैं। तो अलग अलग लेवल, शारीरिक लेवल पे भी और मन के लेवल पे भी जो होता है वैसे हम लोग देखते नहीं है। जो इम्परमानेंट होता है हम लोग उसको परमानेंट समझते हैं, जो परमानेंट होता है उसको इम्परमानेंट समझते हैं, जो बदलता रहता है उसको हम लोग समझते हैं कि कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है उसको समझते हैं हम लोग बदलते हैं। तो ये ऐसे अपने मन की स्थिति होती है, ऐसा अपना परसेप्शन उसका होता है, उसी को बोलते हैं कि ये सब इल्यूजन है। तो जैसे ही इस सत्य को तुम मान लोगे कि ये जो दृश्य जगत है यह असत्य है, उसी के साथ साथ फिर ये जो सारे जो अपने तुम्हारे बंधन है, सुख दुख पाप पुण्य, ये जो सारे डिजायर्स वास्ताएं जो लगते हैं, बॉन्डेज तुम्हें जो महसूस हो रहा है, बंधन तुम्हें महसूस हो रहा है, ये अपने आप टूटने लगेगा। सो बोलते हैं कि ये सब कंसेप्ट जब टूट जाएंगे तो अपने आप यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स।
सो यही वशिष्ठ मुनि भी बता रहे हैं, और यही अपने को यहाँ पे साइंस की जो डॉक्यूमेंट्री है, जो टॉप मोस्ट वर्ल्ड के साइंटिस्ट है वो भी बता रहे हैं। स्ट्रिंग थियरी क्या होती है उसको हम कल देखेंगे। अभी अपना समय हो गया, ये आपका समय है, तो इस सत्र को अभी हम लोग खोल देते हैं। आप जरूर अपना अनुभव, आपने जो पढ़ा हुआ है, आपका अंडरस्टैंडिंग जरूर कृपया करके शेयर करें। यदि आपके मन में प्रश्न है तो चर्चा को मस्त थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं मैं ही उसका उत्तर दूंगा, कोई जरूरी नहीं कि उसका मैं उत्तर आज ही दे पाऊंगा। हो सकते हैं कई सारे प्रश्न ऐसे जो होंगे उसके उत्तर हमें आज भी पता नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, ठीक है। हमने अपने ग्रुप से कोई और डिस्कस कर लेगा। हो सकता है कि हम लोग सब लोग मिलके उसका उत्तर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। सो व्हाट, डजंट मैटर। तो जरूर अपने आप को रोके नहीं, प्रश्न पूछ ले, और जो कंट्रीब्यूट करना है, आपकी जो टेक अवे जरूर आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो और कुछ और एडिशनल डायमेंशन इसको मिल जाते हैं, और थोड़े एस्पेक्ट समझ में आ जाते हैं। और उसी को तो बोलते हैं सत्संग, उसी को तो बोलते हैं साधु संग, हाँ? तो हम लोग हैं ग्रुप में, तो लेट अस यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू ऑल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड you will be able to speak. So we have Sangeeta ji with us, we have Sachin ji also with us, huh? तो let us listen to them. राम जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आपको भी व्यक्त होना है? उषा जी is also there with us. Wow. So yes, let us all discuss now together. So we can begin with anyone. Usha ji, would you like to start? Would you like to say something? Yeah, unmute yourself. I am opening the session. You will be able to unmute yourself. अपने आप कर सकते हो, लेकिन one by one. Zoom support नहीं करता इसलिए. Yeah, Usha ji, over to you. Yes, I would like to say that I'm just thoroughly amazed at the correlation between modern day quantum physics, the little bit I know, and the information that in our book. The fact that so many years ago this knowledge was known and now it's being talked about in science is incredible. One thing that struck me from the movie was when they said matter is concentrated thought. That I really liked. And also what you see is what we believe is possible. I thought that was incredible. And then from the book, it says the creator is the mind. Mind or pure intelligence is his body. Thought is inherent in the mind. The object of perception is inherent in the perceiver. Who has ever discovered a distinction between the two? I'm amazed. I'm very amazed. I did have one question. Please go ahead. Okay. Now that we know that things may not be as real as we think they are, how do you when you're a new mother and you have a newborn baby and you have those feelings for the baby, they feel awfully real, don't they? Yes, they do. We perceive that's something which is real, and then we experience that same feeling, as though it's our real. Yes, so that feelings do exist and we perceive them as real. But they're not real. No, that is what Vashishta is telling us. How? Okay. That patience, and it will be unfolded later. Just like the petals, that one by one that petals will be opened, and we'll finally get to know how. So there is very beautiful. Thank you. Map that has actually in the last sessions I have done how this entire creation is started, and how the things comes from the mind level, how this mind itself is created, how that ego comes into picture, whatever this Maya is, what we call the entire universe creation, the matter, energy, life force, intellect, your body, all these things, how does that comes into picture? There's a very beautiful story that we will unfold little by little, but for now, whatever we saw, whatever we discussed, it is that let us first believe, because it's very difficult to believe. We have been so many years, we have been thinking whatever we are seeing that as a real,
and now somebody's telling you that that's not real. It's not that easy to digest. So let us be Thank with you so that. It's so, much. yes, Ushaji. So we Thank you. also have Sangeeta ji with us. Let us hear out Sangeeta ji, Shachwin ji. We have Dinesh also with us. We'll listen to Dinesh as well. Yeah. So Dinesh, would you like to say something? Please. Yeah. I want to tell something. One curiosity regarding, I think you have explained better Yoga Vasishtha as well as Ashtavakra. When that Dasharatha in sleeping mode and taking some bread and some few birds, one bird is coming and taken away his bread. That time after that he coming in from sleeping mode to original mode. Same that question before half an hour my son is asked to me. Oh, Is wow. that is Okay. that is that he had done a intuition process. Intuition Oh, process before 1 week he sitting on a chair and just just sleeping in mode. He asks one question. He asked one question before 1 week. His mother in Pune Talegaon. Okay, so that time his mother doing the seva with his father and mother in COVID center, and at that time he found that after 1 week his mother also got a COVID patient, and right now today is happened. So can this correlate with the Yoga Vasishtha and this my son's question? yes. Because it's a Yes. The short answer is yes. How? That is the long answer. So we really got to see how this entire intuition process works. What happens in this intuition process, and pure consciousness when you actually start going deeper into within, how your all this ignorance seems to disappear. And when you are established within yourself, the Gurudev always explains this: the seed of all knowing is actually present in you. And how that so beautiful? No, she said that, do you know how many hairs are there on your head? We don't know. We are ignorant about it. But at the same time, if someone pulls that one particular hair, you know it. Oh, that particular hair is getting pulled. No, so the seed of all knowing is actually present within us. No? How this small little sperm gets formulated into the entire body? How come that small little tiny DNA carries so much of intelligence? If you happen to do the wellness program, you'll know that each and every cell of your body is so intelligent. No, it knows what to do. It knows how to digest the food. It knows how to distinguish what is not good for it. It knows if you get hot, how what to do with your body. Automatically, it starts sweating. Such an amazing thing, such an intelligence. Not just our human body. See, look at the intelligence in this entire creation. So much of intelligence. Huh? All these birds, all these species, all these trees. So much of intelligence is there. Hmm? Even the birth process itself, somebody gets born out of the mother's womb, somebody is get born out of the eggs, and there is also in the fourth side that has been explained that some in the that tin, no, the one which is the tin, suddenly that insects get born out of nothing. From where they come there, they come born out of nothing. No, how does that happen? And there are no answers. Forget about all these big things. We don't even know how to create a blood. We say we are very advanced medical science. हमें नहीं पता है रक्त कैसे क्रिएट होता है. We don't know how the blood gets created. ये अपनी स्थिति है. और फिर हम लोग बोलते हैं हम लोग सब कुछ जानते हैं. In reality, we do not know all these things. No. So when the seed of knowing all is present, and when you go deeper into that within, you know it. So those kind of things do come. The topic is a little bit about something called as siddhis. No, but siddhis are discussed on Yoga Vasishtha and Nirvana Prakarana. So we'll touch base upon that in detail that point of time, so that we can correlate what these energies are, what these powers are. No, the hidden powers which are there is possible to achieve them, and all our young kids are
being showered this blessing in the form of infusion process. Very nice. And very soon Gurudev is going to introduce infusion process even for the adults also. So let's pray for that, that even that knowledge will come to us. But do not get stuck into service. It's read as an obstacle in in the Patanjali Yoga Sutra. One of the obstacle is that siddhis. Don't get stuck into it, but it's good idea to just know it and learn about it and use it for some good purpose. If at all that thing comes to us, those powers are down within us, it is for us to help others, no? Not to utilize it for yourself. Selfish purpose के लिए नहीं होती है powers. It is to be used for the creation, for the universe. Thank you so much, Dinesh. Thanks for bringing in. More things will unfold. As I said to Ushaji also, we'll unfold it. Very good. Thanks a lot. Now let us look at what Sangeeta ji and what Sachin ji have to say about it. We'll also listen to Ram ji also. So let's start one by one. Sangeeta ji would like to say. Yes, thank you so much, Surji. It was very beautiful, you know. It is like unfolding the realization that we get. So that spiritual quest that we are in is very good for us. So let us be in that. And slowly as it realizes, as you get step-by-step transformations of our own being into a progressively better and more better of my own self. So you have that compassion dawning within you. So let us have that, that step-by-step transformation is very much required. So let us be in that quest and go ahead. Okay. Then what happens? The result is you have a transforming personality in that. So your full transforming of your personality becomes here. So it will take time. Just exactly as we go to the gym, one day you cannot build your muscle. It's not a thing, right? You take months to build your muscles, right? In the same way, we are here. So it doesn't mean that overnight something will happen to us. Maybe in intuition it happens with Gurudev's blessings, but still when we go step by step, so we have that realization also with us. So let us be the witness of that also, how the transformation is happening. And then we can see the changing of our attitude. Even our attitude changes, our perception changes, we have the motivation and we have a different approach to the life itself. What we were before, we don't remain that same. Do you agree, Ushadi, with me? That is the path of evolution. So here we, all of us, even a small blade of a grass is on the path of evolution to the highest. So we are also there. So let us be in the journey again. Isn't it? Yeah. And we have to live what we do. That is the point. When we live that life, then only it comes, a transformation comes and we can see it as self. Okay. And that is, of course, a total commitment, what I feel, living that life itself. Yeah. So it's just like, climbing a mountain. So what happens as you go up, the view becomes very clear for you, as we are going up the mountain. So it's the same way. So let us be in that and reach to the top. Yes. So is that okay? Yes. Thank you. So very short today, but I think so it's to the point. Yeah. Anybody else can also add to that? Sachinji, what you would like to say? Ushaji, you can also add. No worries. Yeah. Yeah, thank you so much, Raji. Thank you, Sangeeta ji. Yeah, it's a beautiful insight. I would like to start with one funny incident which happened with me. Long back, I had a dream, and in the dream I was discussing with my friend, and out of some discussion, he got agitated and was discussing very furiously with me some points. And in dream, I told him that, hey, don't be calm, don't be so agitated, just relax. This is after all a dream. I was telling this in dream to that person. And this is just a dream.
and we have some time. Let's continue for some time and prolong this dream for some times. So he was also then got relaxed, and we had some time. So that was the weird dream and the funny incident what I had long back. I just want to highlight a few points here. Someshwarji has beautifully explained everything. We need to find out what is permanent in our nature. The real has to be permanent and unchanging. That should be the first quality. So if we apply that benchmark to everything else, what we are looking outwards, you will see that everything is changing. In fact, your body is also changing, your mind is also changing. You don't have the same mind what you have carried earlier. Even your brain has got some changes. So which is changing should not be your real nature. Okay. And whatever you have acquired, that is all external. So see what you have brought in this world. So if you think that this is my body, but that is also because of your parents, you have got this body. So this is also not you. So we need to find out who you are. So everything we have acquired, you have got some X name against you, and you have got some degrees, you have got some wealth, everything you have got achieved externally. But what is you? Who are you? That is the main question, which is unchanging in yourself, that you need to see. I just want to give one example. In our deep sleep, we say after our deep sleep that I had a very good sleep. Okay. So in that, we need to see who is the experiencer of that state. Because at that time, your brain was not working, your mind was also still, and you were not completely unaware about things. But there was something which in you, which was experiencing that state. So we need to understand in our meditation, in awakening state, who is doing the experience, who is getting that experience. That the core thing which is not changing in yourself, you need to find out. And with that, I just want to give one famous story. One cub which mistakenly grows up in a pack of wolves and thinks itself as a wolf only. Start taking all their mannerisms, eating grass and whatever it is, and just getting all that mannerisms. And when after some days, one big lion attacks on that pack of wolves, and seeing the big lion, that little cub also starts running. And after that, the lion got hold of that cub and shows him into the pond his own self. So when he sees his true nature, that he is also a lion and not pack of wolves, that is the thing we need to understand in this life. We have assumed that we are this body, we are some identity and these things. We have put up so many clothes on ourselves that we have forgotten our real nature. So that's why, and Guru does exactly this thing. So he just shows you a mirror that where you can see your reflection as it is. That's it. Thanks. Very nice. Thank you, Sachinji. So Sachinji already started putting the pixels up. Amazing. Yes, we'll look into it more details. Na? This will come. Class going to come. Na? Sari cheezein zarur aayegi. Kusumtai is also there with us. Kusumtai, would you like to say something? Yes. सचिन जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. वेरी नाइस. मैं एक 2-3 इसमें ये डालना चाहती हूँ. एक कामना, विचार, सत्संग महिमा और वो सत्य सत्य तुम्ही आम्हाला सत्य सत्य. हाँ, क्या करा ना.
थोडा कॅमेरा असा ऍडजस्ट केला तर तुमची पूर्ण बॉडी आम्हाला दिसेल. हा सत्य असत्य ह्या 2-3 ह्याच्यावरती मी जरा प्रकाश टाकते. तर एक कहाणीला मी सुरुवात करते. अं, मराठीत, हिंदीत चालेल? कोणतं पण. कोणतं पण चालेल. इंग्लिश मध्ये केलं तर उत्तम होईल. नाही केलं तर आम्ही त्याला ट्रान्सलेट करू. यू फर्स्ट हाँ, एक्सप्रेस. इट्स ओके. विल मैं ट्रांसलेट. हिंदी में बोलते हैं। आप हिंदी में उसको हाँ, अंग्रेजी एक एक अच्छा मिलेनियर रिच पर्सन देयर इज, ही हैज एवरीथिंग, पैसा, गाड़ी, बंगले, उनका जॉब, उनके कंपनीज, सो मेनी बहुत अच्छा। बट उनका जो विचार था, तो वो था कि ये सब मैंने कमाया है, आई हैव गॉन थ्रू मेनी पेन, बहुत मेहनत की है और मैंने कमाया है, तो मुझे तो ये मेरे साथ में लेके जाना है स्वर्ग, मतलब आफ्टर द डेथ आई वांट टू टेक ऑल दिस विथ मी। तो फिर वो ऐसे ही किसी किसी से बात करते थे ऐसे तो लोग तो फिर देखते रह जाते थे कि हाउ कैन इट बी, अभी तक तो कोई लेके नहीं गया। तो एक दिन वो कार में अपने जा रहा था, तो जो उन्होंने म्यूजिक लगाया था, तो वहाँ एक सत्संग चालू था, प्रवचन चालू था किसी साधु का। तो वो बता रहे थे, तो ही वॉज क्यूरियसली लिसनिंग, क्योंकि एक वन आफ्टर द अदर जो सेंटेंसेस आ रहे थे, तो उनको अच्छा लगा। फिर सुनते सुनते गया, तो उन्होंने बोला कि हमने यहाँ जो भी ये किया है, तो वी कैन नॉट टेक सिंगल सिंगल पैसा और एक सुई भी हम हमारे साथ में लेके नहीं जा सकते आफ्टर डेथ। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि ये तो सत्संग महिमा में साधु बोल रहे, तो इट कैन बी ट्रू बट मैं तो ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं तो लेकर ही जाऊंगा मेरे साथ में। तो फिर वो जब ऑफिस में आए, तो सब उनके जो है स्टाफ अच्छे अच्छे, तो उनको बुलाया, मीटिंग लिया और बताया कि मुझे कोई तो उपाय बता दो कि दिस ऑल मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, तो मैं तो लेके जाना चाहता हूँ, कोई तो इसमें से सॉल्यूशन बता दो उनको। तो सब देखते रह गए कि किसी के पास भी सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे 2-3-4 दिन बीत गए, उन्होंने एडवर्टाइज भी दी एवरीवेयर कि जो भी मुझे बताएगा तो मैं उनको बहुत सारा माल दे दूंगा, जॉब, नौकरी, पैसा और का सब कुछ जो मांगेगा वो दे दूंगा। लेकिन किसी के पास आंसर ने तो कोई आया ही नहीं। अभी ये महीने बीत गए, उसके बाद में एक आदमी आया, अच्छे से, मतलब एकदम सिंपल सिंपल कपड़े, उसके रहनी-मान वगैरह सब सब सिंपल था। वो आया और बोला कि मैं आपके साहब से मिलना चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर उन्होंने बोला और बताया और बुलाया अंदर। तो वो बोले कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पहले आपसे, आप सबसे, तो चलेगा क्या? तो वो बोले हाँ, ठीक है, बोलो, पूछो। तो ही आस्क्ड क्या पूछा होगा कि आप विदेश गए हैं? परदेश गए हैं? तो बोले हाँ। तो वहाँ आपने, यहाँ जो हमारा पैसा है, हमारा यहाँ का पैसा है रुपीज़ में, तो आपने वही दिया होगा। तो वो बोले, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी? वो तो हमको चेंज करना पड़ता है, इंग्लैंड जाएँगे तो वहाँ की करेंसी लेनी पड़ती है। फिर ऑस्ट्रेलिया गए, हाँ, फिर वहाँ वहाँ भी सेम यूज़ किया। नहीं, वहीं वहीं वहाँ की करिए, ये रुपीज़ दे के वहाँ की करेंसी ले ली। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे देश के पूछा कि ये देश में गया है, वो जर्मनी में गया, इधर-उधर। तो वहाँ की करेंसी आपने ली। ऑस्ट्रेलिया की भी उधर नहीं चलती और इंग्लैंड की भी वहाँ नहीं चलती। मतलब डिफरेंट प्लेसेस आपको वहाँ की करेंसी लेनी पड़ती है। हाँ, ये आपको कैसे मालूम नहीं है? मतलब ही वाज़ मिलेनियर जो थे, तो वो वंडर कर रहे थे कि ये सीधी-सादी बात आपको मालूम कैसे नहीं है? तो वो बोले ठीक है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने ऐसे किया, क्यों किया? वो बोले ऐसा करना पड़ता है। देन ही सेड वही तो आंसर है मेरे पास कि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आप ये सब लेके जाना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप ये सब लेके जा सकते हैं। तो वो इतना आनंदित हो गया कि लेके जा सकता हूँ? हाँ, हाँ, आप लेके जा सकते हैं, ज़रूर, मैं बताता हूँ। लेकिन एक बात है, लेकिन एक बात है, मैं आपको आपको स्वर्ग की करेंसी लेनी पड़ेगी,
ये यहाँ जो आपने कमाया है वो सब देकर स्वर्ग की करेंसी लेनी पड़ेगी। तो स्वर्ग की करेंसी लेनी कैसे पड़ेगी? तो फिर उसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है पड़ेगा, तो उन्होंने बता दिया कि आपको पुण्य कमाना पड़ेगा। तो वो कैसे-कैसे? तो समाज का ऋण, पितृ ऋण, माँ-बाप का ऋण, अम, बेटों-बेटियों का सबका ऋण चुका के, ये सब करके तो पुण्य अर्जित करना होगा, और विथ दैट करेंसी यू कैन टेक ऑल दिस टू द स्वर्ग। ये सब मेरा कामना के ऊपर था, विचार के ऊपर था, और सत्संग की महिमा देखो। देन ही वो उसमें लग गया, पूरा उसका ज़िंदगी उसी में लगी। वेरी गुड, धन्यवाद। Such a nice sharing, no, Kusumji, Kusumtai have shared. No? So just to summarize that in a very short thing, is that there is a one person who wants to take everything to the heaven, and then he doesn't find out answer to it how. So he happened to get in touch with, he start finding it, but many years passes like this and he still doesn't get an answer. But one fine day he gets to a very wise person, and the wise person asks him that if you go to different countries, does your same Indian currency works over there? No, it doesn't work. You got to, if you go to US, you have to have dollars. If you go to other country, you have to have that currency. So he explained that this is a simple thing. Similarly, whatever that you have your currency is not going to work in heaven. You'll have to earn the currency, which is you have to exchange your currency which you have now to the currency which works in the heaven. What is that? So that is your good deeds. Now, how to do that? Whatever your money you have today, you utilizing that money, you start doing some good activities here. No, you donate some money, you build some hospitals, you do some seva. No? Then that money will get translated into the currency, which is punya, good deeds, and then that is something which will come along with you to the heaven. So that was, so that is where the importance of that Kusunta is explaining. No? Moksha ke char dwar wale, those four things, no? Vichara, Shama, and then your sadhu sangha, the one company of the good people, how they can transform your life. It was really nice. Thank you so much, Kusunta. It was really beautiful story and very good message also, and very amazing explanation. Thank you so much. किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए. It's already late, 21:52 हो गया है. कुछ कहना है तो फिर भी बता दीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. यदि नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे आज के लिए. वर्षाताई, तुम्हाला काही बोलायचं आहे? या वॉन्ट टू से समथिंग? नाही, सगळ्यांनी एवढं छान सगळं एक्सप्लेनेशन केलंय ना, काही बोलण्यासारखं काही नाही. खूप छान. थैंक यू. तो आज का यह सत्र हम लोग यहीं पे समाप्ति नहीं, स्वल्प विराम लेते हैं ताकि पुनः एक बार इस उत्पत्ति प्रकरण, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे. We'll also watch that science documentary 20 minutes and then we'll see how it unfolds and how it is related to Yoga Vasishtha. So keep reading the third chapter so that it can help us. We can bring in more knowledge. जैसे Sachin ji, you know, Kusumtai, very well explained. Usha ji also very well put her viewpoint. No? Very nice. Let us continue with this. Jai Gurudev.